प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एक कार्यालय तथा बारडोली प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त उपक्रम से बारडोली स्थित सीनियर सिटीजन हॉल में प्रारंभ 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में पूरे राज्य में जागरूकता फैलाना तथा आरोप व्यापारियों, उद्योगपतियों और करदाताओं को नए कानून के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूरत के चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्री NC स्वैन उपस्थित रहे। इसके अलावा बारडोली प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री प्रदीप भाई अग्रवाल, तापी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री अशोक भाई शाह, गुजरात स्टेट शुगर फेडरेशन के वाइस चेयरमैन श्री केतन भाई पटेल तथा बारडोली प्रदेश अकाउंटेंट एंड टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश भाई आई गांधी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के सम्मान एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर विभिन्न उद्योगपतियों, व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तथा करदाताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। करदाताओं के लिए लागू किए गए नए नियम, रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया में किए गए बदलाव तथा टैक्स सिस्टम को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के प्रयासों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उपस्थित लोगों ने नए कानून से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं भी रखी, जिनका संतोषजनक उत्तर अधिकारियों द्वारा दिया गया। इनकम टैक्स विभाग द्वारा राज्य भर में शुरू किए गए प्रारंभ 2026 अभियान का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को नई कर व्यवस्था से अवगत कराना और उन्हें नियमों के अनुसार कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना बताया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों और करदाताओं में नए कानून के प्रति सकारात्मक जागरूकता देखने को मिली। राकेश गांधी, प्रमुख बारडोली प्रदेश अकाउंटेंट टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन, सेक्रेटरी बारडोली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आज रोज सूरत इनकम टैक्स कमिश्नर અને પ્રિન્સિપાલ ઇન્કમ ટેક્સ કમિશનર શ્રી આપણા બારડોલી મુકામે પધાર્યા છે અને એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। એનું નામ છે પ્રારંભ 2025। આનો હેતુ છે કે આપણે ત્યાં ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961 અમલમાં છે, જેને ચેન્જ કરી અને ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 2025 નવો અમલમાં લાવવામાં આવેલો છે અને એ અમલની તારીખ 1/4/2026 થી આ કાયદો અમલમાં આવી ગયો છે। આજનો જે આ કાર્યક્રમનો ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી જે આયોજન કરવામાં આવ્યું એનો હેતુ શું છે તો ભાઈ 2025 ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ જે નવો આવ્યો છે તેની અંદર કયા કયા પ્રાવધાનની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। 1961 64 વર્ષ જૂનો કાયદો છે, જેની અંદર ઘણા બધા લિટિગેશન ઊભા થયા હોય, ઘણા કોમ્પ્લિકેટેડ હોય અને આજના જમાનામાં થોડુંક સરળીકરણ હોય તો જે ટેક્સ પેયર છે, જે વેપારી મિત્રો છે કે જે કોઈ ટેક્સ ઇન્કમ ટેક્સ ભરે છે એ પોતે સરળતાથી આ કાયદો સમજી શકે, સરળતાથી ઇન્કમ ટેક્સ ભરી શકે અને જે ઇન્કમ ટેક્સ પ્રત્યે જે ડર છે વેપારી વર્ગની અંદર એ ડર દૂર થાય, આ હેતુથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી કરવામાં આવેલું છે અને સરળ સમજૂતી આપવામાં આવી છે અને ટેક્સ પેયરોને આહ્વાન કરવામાં આવ્યું છે કે ઇન્કમ ટેક્સ કાયદો એકદમ સરળ છે, એને સમજો, એનો ડર અને ભય રાખવાની જરૂર નથી। जी, किस वजह से वो उसका मेन उद्देश्य क्या है? आज का जो सेमिनार उसका नाम है प्रारंभ 2026। इसमें न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 उसके बारे में लोगों को जागरूकता और सचेतन करने के लिए ये प्रारंभ का प्रयास पूरा देश भर में अलग अलग शहर में किया जा रहा है, ताकि ये नया पुराना जो 1961 का कानून था इनकम टैक्स एक्ट, जो पुराना और कॉम्प्लेक्स हो चुका था, उसके जगह सिंपल सरल नया कानून 2025 का लाया गया है। उसके बारे में सचेतन करना इस आज का प्रायोजन था। साथ में QR कोड दिया गया है ताकि कोई भी अपना फीडबैक दे सकें, गवर्नमेंट तक पहुंच पाएँ, सेंट्रल गवर्नमेंट तक। तो QR कोड डायरेक्टली जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, और उसको स्कैन करें और अपना जो भी फीडबैक वो दे सकते हैं। धन्यवाद। ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટનો જૂનો એક્ટ હતો 1961,
તેને રદ કરીને નવો એક્ટ ઇન્કમટેક્સ એક્ટ 2025 આવ્યો છે, જે પહેલાં જે બધા કોમ્પ્લિકેશનો હતો તેને સરળીકરણ કરીને નવો એક્ટમાં સુધારો કર્યો છે, જે વિકસિત ભારત 2047ના સંદર્ભમાં કરવામાં આવ્યો છે. કેટલા લોકોએ ભાગ લીધો? આની અંદર બારડોલીના ઇન્ડસ્ટ્રીઝવાળા વેપારી બધા મળીને 500-550 લોકોએ ભાગ લીધો છે. સાથે નાગરિક બારડોલીના નાગરિક પણ હાજર હતા. સેમિનાર કરવા કોણ કોણ આવ્યું હતું અને કયા અધિકારી? આ સેમિનારની અંદર સુરત ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના ચીફ કમિશનર શ્રી એબી સાયન સાહેબ, મિશ્રા સાહેબ, ચંદાનંદ સાહેબ અને પૂરું ડિપાર્ટમેન્ટ આવ્યું છે. અને એ ગુજરાત બારડોલી માટે ગૌરવની લાગણી છે કે પહેલી વાર આખું ડિપાર્ટમેન્ટ આવ્યું છે અને લોકોને અવેરનેસ માટે જાગૃત થઈ રહ્યા છે. એના માટે અમે इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आभार मानिए इकट्ठे हुए हैं, इसका नाम है प्रारंभ। ये प्रारंभ है एक नई शुरुआत का। इस नई शुरुआत में जो पुराने जूना टैक्स एक्शन ने रद्द કરીને નવા ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 2025 ને સિમ્પ્લિફાઈ કરીને જૂના એક્ટમાં ફાઇનાન્શિયલ યર 25-26 અને એસેસમેન્ટ યર ये नया एक्ट लाने का जरूरत क्या था कि जब पुराना एक्ट से